इंटीग्रल्स 8.8 सेक्शन है थॉमस कैलकुलस का। इससे पहले ये भी बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बाजुकात के लगता है कि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। लेकिन फर्क क्या आता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में यू हैव टू, इफ एफ इज पॉजिटिव देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ फाइनाइट रीजन, बट इन दिस केस द एरिया you have to calculate the area if f is greater than equal to 0, then you have to calculate the area of some infinite region. Infinite region आपको बाहर नजर आ रहा होगा, जैसे अगर आपके पास ये ग्राफ है 1/x² का, and you have to integrate it from 1 to infinity. Now this graph 1/x², the graph of 1/x² is like this, and you have to calculate the area of this region from 1 to infinity. So this region, ये सारा रीजन आपको नजर आ रहा है, ये क्या इनफाइनाइट रीजन नजर आ रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें वी हैव टू डिफाइन स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल विच आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, y इज इक्वल टू 1/x from 1 to infinity. So this region seems to be infinite. So we will determine whether the area of this infinite region is finite or infinite. We have to determine it by using the limiting value of this integral. And we call this integral as improper integral because it corresponds to some infinite region. Here the x-axis serve as the asymptote to this curve y is equal to 1/x². Right? So in this section, we will learn how to solve definite integrals where the interval is infinite and where the function has an infinite discontinuity. So you will learn two types of integral over here. The first is when the interval is infinite. And the second one is f has an infinite discontinuity in the interval AB. So our improper integrals has two types. The first is called type 1, that is this one is type 1, that is when the interval of integration is infinite. And the second one is type 2, that is when f has an infinite discontinuity on the interval AB. So when the interval is infinite, interval integration is infinite, so such type of integral consists of when you have a to infinity f dx, or minus infinity to b f dx, or from minus infinity to infinity f dx. So improper integrals of type 1 have these three forms. If the limit of integration, one of the limit of integration or both the limit of integration are infinite, it means the integral is improper integral of type 1. Right? This is your improper integral of type 1. These are the three cases of the improper integral in which the limit of integration is infinite, both the limits or either of the limit or the upper or the lower limit is infinite. In that case, then that integral is type 1 improper integral, and we will evaluate such type of integrals a bit different from the definite integral. Their evaluation is a bit different. So we will integrate them as a limiting value of the definite integral, right? So this is type 1, and type 2 is, let's see, let me explain first the type 1 integral. That is, I have explained, that is 1/x². It is from 1 to infinity. So since this limit of integration is infinite, so this is type 1 improper integral. And in this case, this is my region, y is equal to 1/x², and this x-axis is the asymptote to this curve. So the type 2 integral is when f has an infinite discontinuity. That is, the function f, that is my integrand, is undefined on either a or b or between the interval AB. That is, it has an infinite discontinuity. For example, what is infinite discontinuity? If I have this
I have this integral 1 over x square dx from -1 to 1. So both of the limits of integration are finite, but 1 over x square becomes infinite on this interval -1 to 1, that is at 0. When I draw this curve 1 is equal to 1 over x square, this would be my graph, and my region is, since f of x is positive, so it would be the area under this curve from -1 to 1. So this would be my region. And at x is equal at x is equal to 0, the function becomes infinite, so it has an infinite discontinuity, that is the y-axis serves as an asymptote, vertical asymptote to this curve. So I have to find the area of this region, this infinite region. So in type 1 region, this area extend to the x-axis, and in type 2 integrals, or sorry, in type 1 improper integrals, this area, this region extends towards the x-axis, positive x-axis or the negative x-axis, and in type 2 region, this integral or this curve extends with the y-axis, positive y-axis or the negative y-axis. That is x-axis in type 1 improper integral. X-axis is the asymptote, and in type 2 improper integral, y-axis is the asymptote to the curve. Okay, now this is your definition of improper integral. I have explained this graph, this integral y is equal to 1 over x square. That is, what will I do? This is would be my area, and I will just replace this infinity with this t. What I have done, I have replaced that infinity with this t. I will just simply evaluate this integral like I have evaluated the definite integral. I will get this answer. Now in the end, I will take the limiting value, that is t approaches to infinity. And when t approaches to infinity, 1 over t approaches to 0. That is, this is the area under this curve when t approaches to infinity. That is 1 to infinity of 1 over x square dx is equal to area, is equal to 1. That is, this has a finite area. Although the region seems to be infinite, but the area of this infinite region is equal to 1, which is equal to, which is infinite, which is equal to 1. So this improper, or in other words, I will say this improper integral converges. If I will get some finite number after evaluating the improper integral, then in that case I will say that the improper integral converges, right? Similarly, this would be my answer. So what I have done, first I have replaced this infinity with this t, where t is any number which is increasing without bound, that is t approaches to infinity. Just expand it, evaluate this integral like you have evaluated in the definite integral, then you will get, and then take the limiting value of this. So if I take 1 over x dx, what will I do? I will replace this infinity with t, is 1 over x dx. Simply evaluate this. The integral of 1 over x is ln of x. Limits of integration are t and 1. Limit t approaches to infinity. Limit becomes ln of t minus ln of 1. Ln of 1 is 0. So I have to take the limit ln of t when t approaches to infinity. What would be the limit of ln of t when t approaches to infinity? Does not exist. क्या लिमिट है इसकी?
ln of t when t approaches to infinity. जी infinity होगी ना, it is infinite. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 over x, the integral 1 over x from 1 to infinity diverges. इसका एरिया आपके पास 0 के इक्वल आ रहा, ठीक है? ये देखें, ये अगर आप this is the graph of y is equal to 1 over x, and I have to evaluate it from 1 to x, 1 to infinity. So this is infinite, but my integral 1 over x square is finite. Why it's so? Why this happens? This integral is divergent. So it means, as you have seen, the integral 1 over x square converges and 1 over x diverges with the same limits of integration. क्या वजह है इसकी, क्यों होता है ऐसा? दोनों ही इनफाइनाइट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों पे ही x एक्सिस एसिम्प्टोट है, both have x एक्सिस asymptote, both represent an infinite region, but the area for the first case is finite and for the second case the area is infinite. क्या वजह है इसकी? 1 over x का जो इंटीग्रल आता है वो ln of x आता है, लेकिन 1 over x स्क्वायर का पॉलिनोमियल आता है, तो मे बी इस वजह से। तो ज्योमेट्रिकली क्या रीजन है इसके? मैं 1 over x की एरिया रिड्यूस कम हो रही है उससे, because this approaches to 0 and this also approaches to 0, but this 1 over x square approaches to 0 faster than 1 over x, right? Because it decreases sufficiently largely as compared to 1 over x. उसका डिक्रीमेंट उसकी निस्बत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ये फाइनाइट एरिया बन रहा है 1 over x स्क्वायर का, और 1 over x का इनफाइनाइट बन रहा है. इसी तरीके से what about 1 over x cube, 1 over x4? Are they convergent? The integral of 1 over x4, x5, x6, are they convergent? Yes, वो भी convergent है. वो भी convergent होंगे on the same reasons, क्योंकि वो और ज्यादा तेजी के साथ they will approach more faster than 1 over x, than 1 over x square and obviously 1 over x. So आपके पास एक चीज ये आ गई. So now you have to evaluate. Example 2 is evaluate x e power x from minus infinity to 0. So first you will replace this minus infinity with this t, and then take the limit t approaches to minus infinity, right? Now you will integrate this integral. How will you integrate it? How will you integrate? Integration by parts by taking, which would be the first function? X is the first function and e power x is the second function. So this is the integration of x e power x from t to 0. X e power x t to 0 minus e power x t to 0. After putting the limits, you will get this. Now you have to take the limits of this function. Basically, this is, here is your question, minus infinity to 0 x e power x dx is equal to limit t approaches to minus infinity, right? And then here you will get is equal to limit t approaches to minus infinity. Now you have to take the limits. पहले आपने इसको solve करना है in terms of t. Your answer would be, after putting the limits, your answer would be in terms of t. Then you have to take the limits t approaches to infinity. This is the proper procedure to solve an improper integral of type 1, right? तो ये आपने ऐसे ही follow करना है. इसको और तरीके से करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. Okay जी, now you have to check the limit of this
ये लिमिट आपने ऐसे ही फाइंड करनी है एज यू हैव डन इन योर कैलकुलस 1. सो इसको देखते हैं. ये -1 is a constant. It would be the same. E power t when t approaches to minus infinity is 0. 0. 0. So this becomes 0. So what about this, the first one? What would be the limit of minus t e power t? Limit of this t is infinity, and e power minus infinity is 0. 0. So it is infinity into 0. So if I write it as this, I can write it this way: minus t into e power minus t. I can take it into this way. Yes, ma'am. Now what would be the limit? Infinity in the numerator and infinity e power minus minus infinity, which is e power infinity, which is infinity. So this is infinity over infinity form. And now I have to take the limit of this infinity over infinity form. So I can apply the L'Hopital rule. L'Hopital rule mean I can take the derivative with respect to t. Derivative of minus t is -1, and derivative of e power minus t is minus e power minus t. This becomes plus. Okay. Now what's the answer? Infinity. You can write it as limit e power t approaches to minus infinity. Is it infinity or 0? 0, 0. 0. Now this is equal to 0. So my limit is -1. Okay. So the integral is convergent. Minus infinity, the integral of x e power x from minus infinity to 0 is -1. This is how you will solve it. Improper integral. Take the limiting value, then solve it. Okay. Let's move to the next question. Example 3. Okay, now solve it. Solve this question. Whenever I have whenever both the limits of integration are infinite, I will break the interval between any point on the interval. किसी एक पॉइंट को आप लेके उस इंटरवल को ब्रेक करेंगे. So I will write -infinity to, I can break it. 0 is easy to be evaluated, so I will break the interval on 0. Minus infinity to 0, 1 over 1 plus x square dx, plus 0 to infinity 1 over 1 plus x square dx. Now I will evaluate both of these two integrals and then solve my question. So if I evaluate 0 to infinity, I will replace infinity with t. Limit t approaches to infinity, dx over 1 plus x square. So the integral of 1 over 1 plus x square is tan inverse of x with limits t to 0. After putting the limit of integration, I will get tan inverse of t minus tan inverse of 0. What is the tan inverse of 0? Tan inverse of 0 is 0. जी बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. I cannot hear you. And tan inverse of t when t approaches to infinity, or tan inverse of infinity, is pi by 2. Similarly, I will evaluate my integral from 1 over 1 plus x square from minus infinity to 0. I will replace minus infinity with t and take the limit t approaches to minus infinity, dx over 1 plus x square. Integral of 1 over 1 plus x square with respect to x is tan inverse of x. Putting the limit of integration, this tan inverse of 0 becomes 0, and minus tan inverse of t. Tan inverse of minus infinity is minus pi by 2. So minus into minus pi by 2. So what would be my answer? Pi. Pi. Pi by 2 plus pi by 2, which is equal to pi. So this is the graph of tan of t.
This is t is equal to pi by 2 tan of t. Tan of t is 0 at t is equal to 0, and this is the graph of t minus pi by 2. And tan of t approaches to minus infinity when t approaches to minus pi by 2. So this becomes pi by 2 plus pi by 2 is equal to pi. मैम ये इंटरवल ब्रेक कर किए बगैर भी तो ये वही आंसर आता, तो फिर ब्रेक करने की क्या जरूरत थी? Basically, we want to evaluate it as a limiting value of the t. ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टी के साथ इसको करना था। जैसे यहाँ पे जब हमने लॉपिटल रूल लगाया था, तो लॉपिटल रूल हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते ना विदाउट लिमिट। यहाँ पे हमने इसको टी के साथ रिप्लेस करना है ना, तो ब्रेक करना जरूरी है ताकि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लगे और यहाँ पे इन्फिनिटी लगे, ताकि अगर लॉपिटल रूल लगाना भी हो तो आप उसको इजीली उसके साथ लगा सके। तो ब्रेक करना इस केस में जरूरी है ताकि अलग अलग वो टी लिमिट आप लेके उसको कर सकें। इंटीग्रल तो दोनों का सेम आएगा, लिमिट्स डिफरेंट होंगी थोड़ी सी। ठीक है, तो आपके पास ये पाई बाय 2 के एक वाला। ठीक है, तो अगर आप इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/1 plus x square, basically you have to find the area under the curve because 1/1 plus x square is positive, so you will find the area under the curve y is equal to 1/1 plus x square from minus infinity to infinity. So this region seems to be infinite, but its area is finite, which is equal to pi, and you have to seen how will you evaluate this. Okay, so students, basically what we have done, we have taken the type improper integral of type 1, और वो है हमारे पास कैसे evaluation होगी। एक उनमें से ये केस है, you will write it as limit t approaches to infinity from a to t f dx, evaluate it and then take the limit. Minus infinity, if you have this case, then you will write t approaches to infinity, integrate it the same way, put the limits and then take the limits. Put the limits of integration and then take the limit. And you have, if you have minus infinity to infinity, then first you need to break the interval by taking any point on this domain. For example, a, you can take 0 for your convenience, f dx, and then write limit t approaches to infinity minus infinity to t f dx plus limit t approaches to infinity. In this case, t approaches to minus infinity. This is minus infinity and this is positive infinity from, sorry, over here I have t to a, and for this I have a to t. This is how you will evaluate your improper integral of type 1. Okay, ये understand हो गया? एक example ये थे, example 2, example 3, and now the last example, example 4. Now the nature of the question has been changed. Now you have to find the values of p. For what values of p is the integral 1/xp dx convergent from 1 to infinity? So as I already told you that if the answer of your improper integral is a finite number, then your improper integral is convergent. And if the answer of your improper integral is an infinite number, for example, infinity like that, then your improper integral is divergent. ठीक है, ये नोट कर लें पॉइंट अपने पास, यहाँ मैंने पीछे लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट इंटीग्रल के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने का क्या मतलब है। How do you know that your improper integral is convergent or divergent? You will evaluate your improper integral. If you get a finite area, it means your improper integral is convergent, and if you get an infinite area or an infinite number as an answer, then your improper integral is divergent. Now, you have to find those values of p
so that your integral becomes convergent. We have evaluated this integral for two cases when p is equal to 1 and p is equal to 2. For p is equal to 1, this integral becomes divergent. This integral was divergent. And for p is equal to 2, this integral is convergent, right? So now we have to determine all those values of p, whether fraction, it could be rational number, it could be a real number, such that this integral is convergent, right? So first of all, I will write this integral as the limiting value, that is, I will write 1 to infinity 1 over xp dx is equal to limit t approaches to infinity from 1 to t 1 over xp dx. So limit t approaches to infinity from 1 to t x power minus p dx. So I will suppose that this p is not equal to 1. If this p is not equal to 1, it means I can apply the power rule over here for the integration. If p is equal to 1, I have checked that case. The integral is divergent. So I'm excluding the case when p is equal to 1. So my integral, what would be the integration of x power minus p? Other when p is not equal to 1, it is minus p plus 1. Use the power rule. Minus p plus 1. Limits are from 1 to t. Limits of integration. So it becomes, I can take 1 minus p common. My answer is x power, t power minus p plus 1, and then minus 1 power minus p plus 1, which is equal to 1, which is equal to minus 1. Okay. Now what about the integration of this? यही आ गया ना? What about the limit of this? जी स्टूडेंट्स क्या हो गया, सो गए हैं सब? बताएं क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन? -1/1 minus p. Limit of t approaches to infinity 1 over t p minus 1 minus 1. ये अब बताएं, हमें ये फाइंड करना है. p minus 1 -1 over 1 minus p. 1 over -1 over 1 minus 0. t approaches to infinity of t power p minus 1. ये लिमिट फाइंड करनी है, मैं इसको सिर्फ अलग लिख रही हूँ, सिर्फ हमें ये फाइंड करना है. अगर ये फाइंड हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया. t approaches to infinity of 1 over t power p minus 1. ये क्या लिमिट होगी? 0. 0 होगी. फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं हो सकती. नहीं. अगर p आपके पास हो 0 के इक्वल तो फिर क्या होगी? If your p is equal to 0, then अपना से आप फिर इन्फिनिटी हो जाएगी. फिर इन्फिनिटी हो जाएगी. और अगर p आपके पास 2 के इक्वल हो तो फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 over infinity आ जाएगा. वो 0 हो जाएगी. अगर p आपके पास 3 हो तो फिर तब भी सेम रहेगा. तब भी 0 आ जाएगा. और p आपके पास अगर इक्वल हो -1 के इक्वल हो तो फिर तब भी 0 ही आएगा. तब 0 आएगा -1 के इक्वल हो. अब इन्फिनिटी आएगा. इन्फिनिटी आएगा. और p अगर इक्वल हो -3 के तो फिर तब 0 आएगा. 1 के अलावा जो भी 1 वाला केस तो हमने निकाल दिया ना. 1 वाला केस तो भी हमने निकाल दिया, क्योंकि 1 वाले केस में ये आंसर आता ही नहीं. 1 के केस में तो ln ऑफ x आंसर आता है ना इसका इंटीग्रल.
वो केस हमने पहले से अलहदा से सॉल्व किया हुआ है, जो पीछे एग्जाम्पल में किया था। अभी तो हम p नॉट इक्वल टू 1 के लिए करें। p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने वही वैल्यू तो डिटरमिन करनी है जिसके लिए ये इंटीग्रल कन्वर्ज करे। p की वैल्यू ही तो डिटरमिन करनी है। अभी हम देख रहे हैं कि दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं। p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो 0 आंसर आ रहा है। यस मैम। यस देखिए p की कोई भी वैल्यू आप 0 से बड़ी पुट करें तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव पावर आ जाएगी नीचे, तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर तो इन्फिनिटी ही होगा। सो व्हेन p is greater than 1, it means p minus 1 is greater than 0. So 1 over, या इसको मैं यूं लिख लेती हूँ, t power p minus 1 approaches to infinity. So it means 1 over t power p minus 1 approaches to 0. So this integral converges when p is greater than 1. ओके और अगर p लेस देन 1 हो, p लेस देन 1 के लिए भी कर, ये केस समझ आ गया। मैं इसको रेज कर दूं फिर। p ग्रेटर देन 1 के लिए इंटीग्रल लिमिट आपके पास 0 आ रही है इसकी, ये ध्यान में रखना। और इसके बाद इफ p is less than 1, it means p minus 1 is less than 0, or 1 minus p is greater than 0. It means t power 1 minus p approaches to infinity, यानी ये चीज आपके पास, और 1 over t power p minus 1 भी infinity को अप्रोच कर रही है। So I can break this into two parts. When I have p is greater than 1, this would be my answer, because in that case when p is greater than 1, this approaches to 0. So I will get minus 1 over 1 minus p, that is 1 over p minus 1. And if p is less than 1, then this approaches to infinity. So the integral, in that case, the integral diverges. So it means we can summarize the result. That is the integral 1 over xp from 1 to infinity is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1. ओके तो ये आपके पास आंसर है। ये एग्जांपल आपकी बार बार आगे यूज होगी, तो इसमें आपने ये जो आपका कंप्लीट तभी होगा जब आपने इसके साथ p इज इक्वल टू 1 वाली एग्जांपल भी साथ लिखनी है। ये एग्जांपल भी आपने साथ इसके करेंगे तो ही आपका ये कंप्लीट होगा, ये वाला। p इज इक्वल टू 1 के लिए अलग से शो करेंगे, ठीक है, और p यहाँ पे आपके पता चलेगा आपको जब आप यहाँ पहुंचेंगे इस इंटरवल पे, then you will see that you have to break this into two parts, p less than 1 or p greater than 1. For p less than 1, this integral diverges, and for p greater than 1, this integral converges. Okay, then you will write all the proof for it, and here is the summary. That is p greater than 1, it could be any integer or it could be fraction as well. You can take, if p is equal to 3 by 2, then this integral is convergent, and if p is equal to 1 or less than 1, then this integral is divergent, right? We will be using this result in our further examples. Okay, and then comes the integral of type 2. So we will see it in the next class, what is meant by the improper integral of type 2. Okay, any question related to this example? मैम एक दफ़ा जी ये वाला पॉइंट दोबारा बता दें कि 1 ओवर एक्स क्यों कन्वर्ज कर रहा था और 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं। अच्छा, इसमें बेसिकली आप ये देखें कि 1 ओवर x का ग्राफ, दोनों का बोथ द ग्राफ्स हैव सिमिलर शेप। ये जरा अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, दोनों का शेप सिमिलर है। ये भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर का है और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स का है, लेकिन ये दोनों एक्स एक्सिस दोनों का एसिम्पटोट है।
ठीक है। लेकिन ये 1/x जब आप x को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1/x डिक्रीज हो रहा है। x को जितना इंक्रीज कर रहे हैं 1/x उतना डिक्रीज हो रहा है। x अगर विदाउट बाउंड इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि आपका ये 0 के करीब होता जा रहा है। राइट, ये तो पॉइंट पता चल ही गया ना आपको। जब आप 1/x उतना छोटा होता होता जा रहा है तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे वो उतना ही छोटा हो जाएगा, वो उससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी 1/x स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन 1/x। तो ये उतना तेजी के साथ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, इससे ज्यादा तेजी के साथ ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। 1/x स्क्वायर approaches more faster than 1/x approaches to x axis। कि ये ज्यादा उसके करीब जा रहा है जी। बेसिकली दोनों तो जीरो को ही अप्रोच कर रहे हैं ना, तो एक को डाइवर्जेंट और एक को कन्वर्जेंट क्यों कह रहे हैं फिर हम? तो ये भी आपने देखा भी ना उसमें, ये जब मैंने आपके सामने एग्जांपल किया आपने देखा कि उसमें एक में कन्वर्ज करे एक में डाइवर्ज करे। क्यों कर रहा है कि इसमें आपके पास इनफाइनाइट आ रहा है आंसर और इस वाले में आंसर 1 आ रहा है। नो मैम, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग। ज्योमेट्रिकली रीजन भी तो यही है कि ये चीज ज्यादा छोटी है इस चीज की निस्बत, और द सेम वैल्यूज ऑफ x 1/x करेंगे तो वो जैसे 1/2 करेंगे और 1/2 का स्क्वायर 1/4 करेंगे तो वो इससे ज्यादा छोटी आएगी। तो जो जितना ज्यादा आप x को बढ़ाएंगे 1/x स्क्वायर 1/x छोटा होता जाएगा और 1/x स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो यही रीजन है, शेप डिफरेंट है लेकिन 1/x की वैल्यू और 1/x स्क्वायर की वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। और इसी फर्क की वजह से आपके पास एक का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है और एक का डाइवर्ज कर रहा है। और रीजन भी इसकी यही है ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें। ओके मैम। जी, कोई और क्वेश्चन? वानिया कुछ समझ आई है? यस जब हम ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं जी। -1 वाला वो सवाल सॉल्व कर रहे थे तो जब हमारे पास फॉर्म आई थी 1/t रेस्ट पर p -1, तो वहाँ वह 1 पुट करने पे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वहाँ करें तो स्टार्टिंग में करेंगे तो ln x आ जाएगा, ये हमें पता है, वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? बेटे वहां पे इसलिए नहीं पुट कर सकते कि जब आपके पास p1 के इक्वल हो तो ये इंटीग्रेशन ये नहीं बनती ना। इंटीग्रेशन उसकी ये तो तभी बनेगी ना जब आपके पास 1/x नहीं होगा। हाँ सही में। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक्सक्यूज यहाँ मी से स्टार्ट से ही वो डिफरेंट हो गया ना। ये 1/, वो तो फिर आपकी इंटीग्रेशन ये बनेगी ना 1/t 1/x dx। तो p को आप 1 तो ले ही नहीं रहे ना, ये तो ln of x आ गया ना। सही है मैम। ठीक है, तो ये p नॉट इक्वल टू 1 के लिए ही आप ये पावर रूल यूज करते हैं। अगर आपको पावर रूल याद हो तो वो p नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और अगर p n जो है वो नॉट इक्वल टू 1 n 1 होगा तो फिर आपने ln t लगाना है, वो केस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो हम उसमें 1 नहीं लगा सकते। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मैम, जी, मैम ये सिर्फ कन्वर्जेंट का क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन है तो डाइवर्जेंट का भी बताना है। कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका मतलब है डाइवर्जेंट ही है। मैम मतलब हमने ये बताना है कि डाइवर्जेंट किस सीक्वेंस में होगा, वो भी आंसर करना है। जी, किन वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है और किन वैल्यूज के लिए ऑब्वियसली फिर वो डाइवर्जेंट हो गया। हम वो भी तो चेक करेंगे ना कि कहीं इन p लेस देन 1 के लिए कहीं कन्वर्जेंट तो नहीं आ रहा, वो भी हमारा चेक हो गया। तो बेसिकली कन्वर्जेंट आप जब प्रूव करें या चेक करें तो आप डाइवर्जेंट को भी साथ साथ चेक कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके मैम। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यही देखेंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव कर रहे होंगे, वैल्यूज निकाले बगैर हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? मैम काइंडली मार्क माई अटेंडेंस।